All right. Hello and welcome to YouTube channel HealthQ, the place where our mission is to motivate you and help you to move on to the brighter side of the health. Thank you so much, friends, for being part of HealthQ Rehab's journey, following our videos on YouTube, as well Thank you as so much, one friends, for minute. being part of HealthQ Rehab's journey, following our videos on Just a second. I think there's some problem with the voice. Yeah. So thank you so much for being part of this journey. It's great to see you all always supporting us, helping us to grow our channel. And without wasting any due time, let me welcome today our guest, Dr. Rima Jani. Thank you so much, Rima, for joining today's session. Thank you, Doctor. So, Dr. Rima is a pediatric rehab physiotherapist with HealthQ Rehab. She has got tremendous amount of experience when it comes to helping children with cerebral palsy, and she has got amazing feedback on top of it from all the parents just love Dr. Rima, and she's one of the favorite therapists in our team as well. So thank you, Rima. And Dr. Rima is going to talk about what are the different strategies for cerebral palsy management from physiotherapy standpoint. So without wasting any due time, let's welcome Dr. Rima Jani. Hello, doctor. Hello, Meghna. Thank you so much for your kind words. And I'm really thankful to HealthQ for giving me this platform where I can connect with many parents online as well. And I really appreciate your work and your motto because, see, connecting and going beyond our physical boundaries to provide treatment is a great thing and need of the hour, I can say. Thank you so much. So I'll just quickly. So what we do, no, in these sessions, we first try to do some icebreakers, to keep the mood very light and chill, because this is more of a candid conversation. It's not like a very serious discussion. So yeah, just let me know more about your clinic. How was your day today? What went well? What you enjoyed doing? See, of course, we are with kids throughout the day, and it has been an hectic day. Yeah, currently it's Diwali time, so many of the kids are on vacations. But the best part with pediatric clinic is the kids that we deal with or the population that we deal is kids, and that is the main thing which drives us every day, the energy that they show us. We Right. have to be on our toes when it comes to kids, so it's Correct. like the whole Correct. day you will be Right. dealing Mm. with Ah, kids, and the right. age group that we Mm. see that ranges Correct. from under 1 year to Right. 13, 14 years. So Correct. every child is different and they teach Right. us many things at the Right. same time. Awesome. Awesome. That's amazing. So, just let's start our discussion of today's live with this entire journey, right? How you landed up, or as you said, like the energy is something that drives you towards helping children. What was the story behind choosing pediatric rehab? What attracted you? See, the first thing or the credit that I will give it will be to my mother and my teachers. Uh, Okay. the teachers in our college, I had a few of them who, and the few seniors who were always in that pediatric department providing physiotherapy to the kids, and I always wanted, or I still want to be like them. I still feel that I'm not at their level, and I learned a lot from them. And my mother was the one who always wanted me to work in the pediatrics field. When Okay. I completed my BPT, and when I was about to select the stream of my MPT, Mhm. she was the one, and of course my husband. They both were like, okay, go with this pediatric Hello. field and study. That's awesome. That's awesome. Right. So,
Coming to the next question, which would be a follow up of this, right? How was your journey till now? How has been this journey till now, helping children with a developmental delay? What is something that you have found interesting? What is something that your experience have shown that, yeah, this is something which not many people know, or they should know about it? The first thing is it's a new challenge every day within every child. Like you need to learn a lot of things. Like I still feel that every child and every parent teaches me how to provide best treatment to the child. It's not like everything is not there in the books or in the classroom that we can learn, but when we come Mm, on field and when we are mm, handling the child, the body of the child guides mm. us the best Correct. to provide treatment. And the Mm. parents, we have to be active listener at the same time when we are providing Very true. treatment. Na? When Right. we are doing some exercises at the same time, Mm, we get to know many things from the parent side as well as mm, from the movement, from the posture mm, of the child, mm, from their reflex movements. mm. They make us understand, and it's a new Correct. challenge every day. And I feel that every therapist, especially those who are dealing with kids, they need to be Mm, learner every day, mm, constantly. Because as I said, na, every child with same condition as well, they are mhm. different, they come up with different challenge. uh, Mm. the developmental delays, as you said, every Right. child, uh, Mm, सबका like level अलग अलग है. So we have mm, to deal accordingly, and that's a great thing. You see, it's not mm. monotonous. It's Correct. never the same thing repeated Right. throughout the day. Right. Yeah. So now let's talk on a little more serious note. What is your understanding about neurodevelopmental disorders? ये क्या होते हैं? ठीक है. Especially अगर आप cerebral palsy के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बता सके पेरेंट्स को कि cerebral palsy क्या होता है और इसके वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है. Okay. See, cerebral palsy, जैसे name है cerebral palsy, the name itself has a brain in it. Okay, so Hmm. brain में कुछ injury during the developmental stage. तो developmental stage क्या है? When child is inside mother's womb, जो pregnancy time है, तब से baby का development शुरू हो जाता है. Okay, and up till 2 years of age, or maximum up till 1 years of age, what we say, na, the child is infant. So Hmm. if a fetal brain or the developing brain up till 1 years of age post delivery, if that brain is getting damaged, अगर वहाँ कुछ इंजरी होता है तो पूरे बॉडी पे इफेक्ट होता है. खास करके जो पार्ट अपना मूवमेंट और पोस्चर Hmm. कंट्रोल Hmm. करता है, वो ब्रेन का पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, then the child will end up having cerebral palsy. So the moment the child starts developing inside mother's womb, Hmm. during delivery and post delivery, three Hmm. stages are there where the brain can get injured, and that can lead to cerebral palsy. Right. And what are the common signs, symptoms that usually are seen in a children or else a child suffering from cerebral palsy? Usually when a child is suffering with a cerebral palsy, the first thing that parents should notice is the tone, or when you carry the child now, you won't feel the same tone. Or usually child या तो ज़्यादा rigid लगेगा, और floppy लग सकता है, उसका tone सही नहीं हो सकता है when you are carrying the child. Second thing is चाइल्ड का मूवमेंट बहुत डिले हो सकता है. मतलब जो चाइल्ड को अचीव करना चाहिए एट 3 months ऑफ एज, अ चाइल्ड शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर हेड. बिटवीन 3 to 6 months अ चाइल्ड शुड बी हैविंग कांस्टेंट किकिंग मूवमेंट्स. जब Hmm. बच्चा लेटा होता है ना, तो Hmm. कॉन्स्टेंटली उनके लेग्स मूव करते हैं, दे Hmm. कॉन्स्टेंटली किक with their legs. Hmm. That movement, Hmm. that movement of the hands trying to Hmm. take the hand to their mouth and sucking their Hmm. own thumb, these are the Right. normal developmental sequences. Hmm. If Hmm. parents are not able to see this in their child, Hmm. then these are the initial signs Hmm. and symptoms of cerebral Hmm. palsy. So Right. this needs to be identified early. Hmm.
Correct. And is there something that you've seen in your experience that autism and cerebral palsy both are present at the same time, or is there a link around it? Yes. Anything you've observed? Yeah. Yes, I have seen among few kids where cerebral palsy and autism are coexisting, or you can say is autism spectrum disorder can coexist with cerebral palsy. Why? Because as we have seen now, cerebral palsy is mostly termed for motor components, like the movement Right. and the posture Right. are the main concerns when we Right. see or talk about Hmm. cerebral palsy. And Hmm. autism Hmm. is not just Hmm. about the gross motor development. Hmm. It covers a whole lot of other areas as well. But many a times, a child with cerebral palsy can have coexisting autism spectrum of disorder, or they can also have Hmm. ADHD. Okay. So this needs to be ruled out. It's not Hmm. necessary. जरूरी नहीं है कि Hmm. सभी cerebral palsy के बच्चों Hmm. में autism हो सकता Hmm. है या Hmm. सभी autism वाले बच्चों को cerebral Hmm. palsy. No, Same but with coexist कर सकते हैं. ऑलराइट। और ऐसे कौन से टिपिकल फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से ये पेरेंट को आइडिया आ सकता है कि वही यहाँ पे कुछ तो है और हमें अभी डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाएगा, कुछ सिम्टम्स या कुछ साइंस जो मिक्स दिखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के या फिर एडीएचडी के सीपी के साथ, तो वो कुछ रेड फ्लैग साइंस या कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं तो। See, as I said, cerebral palsy में एक तो जो ग्रॉस मोटर मतलब कि जो हमारा बॉडी ग्रो करता है और जो अचीव करता है, जैसे एक एज पे बच्चा बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, चलना सीखता है, वो ग्रॉस मोटर पार्ट है, उसमें डिले है. एंड एट द सेम टाइम अब हमारे हम सबके सोशल माइलस्टोन भी होते हैं. एक एज होता है जब बच्चा स्माइल करना सीखता है, आई कांटेक्ट करना सीखता है, विजुअल ट्रैकिंग. अगर कमरे में मम्मा पापा भी इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो बच्चा कॉन्स्टेंटली विजुअल ट्रैकिंग करेगा, उनको बुलाने की कोशिश करेगा. इफ नॉट बाय स्पीच देन बाय हैंड आल्सो दे ट्राई टू कम्युनिकेट. If there is lack of social communication as well, they are not giving a smile back to the parent, they are not giving a eye contact back to the parent, they are not interested in communicating verbally or non-verbally, दोनों भी. कई बार होता है कि स्पीच डिले भी होता है सेरेब्रल पाल्सी में, जैसे ऑटिज्म को एग्जिस्टिंग है, स्पीच डिले भी सेरेब्रल पाल्सी में होता है. तो जरूरी नहीं है कि सेरेब्रल पाल्सी, स्पीच डिले और ऑटिज्म तीनों हो, बट अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना बात किए कम्युनिकेट करना, जैसे आई कांटेक्ट एंड स्माइल एज आई से, अगर वो भी नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑटिज्म के सिम्टम्स हो. सोशल ग्रीटिंग्स जो हम करते हैं, कोई आए तो हम सामने देखते हैं, हाय हेलो वाला जो ग्रीटिंग है, सो दोस थिंग्स आर सोशल माइलस्टोन. अगर ग्रॉस मोटर डिले के साथ सोशल माइलस्टोन डिले भी है तो दैट कुड बी द रेड फ्लैग ऑफ सेरेब्रल पाल्सी प्लस ऑटिज्म. राइट, वेरी ट्रू. और व्हाट अबाउट द टोन पार्ट, राइट? जैसे हमने कहा कि मोटर इश्यूज रहते हैं, सो लेट्स कम बैक टू सेरेब्रल पाल्सी. तो क्या फर्क होता है डिस्टोनिया या डिस्टोनिक सीपी में, अटैक्सिक सीपी में और स्पास्टिक सीपी में? अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल दें. सी द नॉर्मल टोन, हमारा जो नॉर्मल टोन है, पहले तो वो अगर मेरा हाथ ऐसे ऊपर है, आई एम एबल टू होल्ड इट अप, तो वो एक मसल टोन है. वॉलंटरीली मैं अपनी मर्जी से हाथ ऊपर रख सकती हूँ, नीचे ले सकती हूँ, मतलब मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है और उस हिसाब से मैं मेरे मसल्स उस हिसाब से फंक्शनिंग कर रहे हैं. अगर अभी डिस्टोनिया है तो उसमें टोन कभी भी सेम नहीं होगा. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको रिजिडिटी ज्यादा मिलेगी, सम पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट फील कि एकदम से मसल में जो लचीलापन होता है जो हमारे मसल्स में होता है उतना है और सडनली रिजिडिटी आ रहा है. कोई रेजिस्टेड मूवमेंट या मतलब अगर आप उनको कुछ ऑब्जेक्ट उठाने के लिए बोलो, जैसे कि सम स्मॉल टॉय या बॉटल है, तो अगेन वो पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है. सो डिस्टोनिया में टोन चेंज होता है. अटैक्सिक सीपी इज अ टाइप वेयर मेनली जो हमारा स्मॉल ब्रेन है, सेरिबेलम, जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं, उसमें इंजरी होता है. तो कोऑर्डिनेशन में बहुत इश्यू होता है. अगर सिंपल चीज है, अगर अपने हैंड को नोज की तरफ ले जाना है
या मुझे मेरे हाथ को अपने हेड पे रखना है या कोई भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करनी है, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आएगी. सो एंड लास्ट स्पास्टिसिटी के जहाँ बहुत मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है, मसल एकदम टाइट फील होता है. इट इज नॉट अ टाइटनेस. Tightness is a different thing, but for the general population I will try to explain के मसल आपको फील होगा कि वो पोर्शन बच्चे का टाइट है. अगर आप हैंड मूव करना चाहो या मुट्ठी बंद है, और अगर आप खोलना चाहो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट to open their hands or fingers. So that is spasticity. It's very difficult in Right. Understood. spastic cerebral palsy. Even to just open a grasp, this movement. Right. And one more thing I would like to say. Yes. Here, जो मैंने ये बताया ना, this one. खास करके हम जब कुछ भी ग्रास्प करते हैं, जब आपने अभी मग उठाया था, तो अपना थंब पोजीशन कैसे होता है? इट इज आउटसाइड द ग्रिप. यस, अगर मैं अपना थंब ही पकड़ रही हूँ तो मैं और कुछ नहीं पकड़ सकती. माय palm is already occupied with the thumb. Now this is a sign. This is a cortical thumb sign which is seen mostly in cerebral palsy. And when you see this sign in a child beyond 3 months of age, initially when a child is born, बच्चे जब जन्म लेते, they have tendency कि वो ऐसे हाथ रखते हैं. But beyond 3 to 6 months also, if your child is not keeping thumb like this or this, it is constantly like this, it is one sign that child is having injury in their brain. So child could have cerebral palsy. So that is cortical thumb sign. So कॉर्टेक्स में इंजरी है, हायर ब्रेन में जो जैसे मैंने बोला एक छोटा दिमाग एक बड़ा दिमाग, that is the venous, the cerebrum, the cortex would be affected. Correct. Right. This is so important and I think ये सारे पेरेंट्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये समझना चाहिए. अगर आपके बच्चे को 3 महीने तक के ये जो साइन है, मतलब ये एक साइन की तरह आपको देखना है. अगर 3 महीने हो गए फिर भी बच्चा अगर अंगूठा नहीं खोल रहा है तो जरूर से आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास चेकअप कराना है. इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी सवाल है जो अभी सेरिब्रल पाल्सी रिलेटेड पूछने हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका जवाब देने की डेफिनेटली आपको कोशिश करेंगे. Alright. Meanwhile, let's move on to the therapies now. Right. हर एक पेरेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि पहले तो थेरेपी करने का सही समय क्या है, राइट? कब से ये शुरू करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन होता है सभी पेरेंट्स का, क्या ये कुछ साल बाद ग्रोथ बच्चे की बंद हो जाएगी या नहीं होगी, या बच्चे के पास पॉसिबिलिटी है हमेशा ग्रो करने की? और जो तीसरा कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स के पास होता है रिलेटेड टू थेरेपी, क्या सारी थेरेपी की जरूरत है, राइट? क्या हम एक ही थेरेपी को करके नहीं कर सकते? तो ये 3 सवाल है जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड. आई वुड लव टू हियर योर आंसर ऑन दिस. Okay. See, the first thing, when to start therapy? As early as possible. Early intervention. मतलब as early when a child is born, of course, parents को नहीं पता होगा कि brain में issue है या नहीं. But अगर there is premature delivery है, birth weight child का कम है, child is low on weight, so अगर initially just after birth child बीमार हुआ है, so that child needs to be taken care of and constantly observed for all the signs. Like parents have to be vigilant enough, और ये बच्चों का pediatrician के पास regular screening होना चाहिए कि बच्चा properly grow कर रहा है कि नहीं, because they will be going to their pediatrician for the regular follow-up. So first person or first medical person to come in contact will be a pediatrician. Now if a parent is noticing कि growth में कुछ issue है, even constant cry है, movements नहीं है, जैसे मैंने बोला बच्चा 3-month-old kid will have kicking movements, अगर movements नहीं है तो they need to go for screening, and after screening immediately they should start therapy. Now second question, like whether the child has any scope after certain age or whether they will grow further. First thing, here we need to understand neuroplasticity.
Neuroplasticity is a term which describes that our brain has capacity to remold. ब्रेन हैज बिन इंजर्ड, सेरेब्रल पाल्सी में ब्रेन इंजरी है, ओके, ब्रेन को डैमेज हुआ है, बट ब्रेन के पास कैपेसिटी है कि वो दूसरे एरियाज को एक्टिवेट कर सकते हैं जो एरिया डैमेज हुआ है उसका काम लेने के लिए, ओके. बट न्यूरोप्लास्टिसिटी is there throughout age, like in me also and you also, at our age also neuroplasticity works, but maximum chances है in the early stages of life, that is up till 2 years of age, 2 साल तक के बच्चे में maximum chances होते हैं कि उनके ब्रेन को हम मोल्ड कर पाए. So as I said ना, early is the best, earlier the treatment better the prognosis. Second thing, मान लीजिए कि डिले हो गया, नई आइडिया आया और ब्रेन इंजरी प्रॉब्लम नहीं था, भी चाइल्ड फुल टर्म डिलीवर हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, बट एज आई सेड अर्लियर, cerebral palsy can occur up till 1 year of age post delivery. So in such cases what happens, इंजरी ही 1 year of age पे हुआ है, डैमेज ही 1 year पे हुआ है, तो भी at that time also the treatment should be started earliest, and it needs to be continuous. Now our brain perceives movement perceive करता है, मतलब if I'm constantly engaging myself in certain body movements, my brain will perceive that movement and will learn it. ब्रेन को ये टेंशन नहीं होता है कि टोन में गड़बड़ है, ब्रेन को वो टेंशन नहीं होता है कि टोन में गड़बड़ है, अगर कॉन्स्टेंटली उसको movement pattern or there is a scope of developing or there is a scope of improving with therapies. Now coming on to therapy part, कि सारी therapies, तो सारी therapies में majorly कौन use in cerebral palsy, otherly we use sensory integration approach. Now both of them are very much linked. I cannot give NDT without SI, I cannot give SI without NDT when it comes to cerebral palsy. So दोनों चीजें चाहिए. Second, there are many other therapies as well, like aquatic therapy, there is hippotherapy, there are many other add-on devices which also helps to a child. Say for example certain orthotic devices, जैसे काफ में जो हमारे पैर के मसल है उसमें स्पास्टिसिटी है और पैर के पंजे कंटिन्यूअसली टोज नीचे रह रही है, सर्टेन किड्स. एक्वेटिक थेरेपी के भी अपने बेनिफिट्स है, हिप्पोथेरेपी के भी बेनिफिट्स है. नाउ फ्रॉम अ पेरेंट पर्सपेक्टिव कि सभी थेरेपीज कराए या नहीं, सो फर्स्ट थिंग इज आपके पास, मेरे पास, पेरेंट के पास और चाइल्ड के पास 24 आवर्स ही है. सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम थेरेपीज अपनी रूटीन लाइफ भी है, चाइल्ड की भी रूटीन, जो एनर्जी लेवल्स है वो भी एक लेवल तक चाइल्ड में एनर्जी होगी कि वो सभी थेरेपीज कर पाए. सो इफ अ पेरेंट इज able to get all these therapies nearby or in an integrated way, it will be the best thing. Possible है तो best thing, but अगर possible नहीं है तो that doesn't mean कि child के लिए कोई scope नहीं है. The best thing to go for this, they can continue with the NDT techniques, with the physiotherapy and sensory integration, because ये दो techniques के लिए major equipment नहीं जरूरत होता है. होम विजिट बेसिस पे या घर पे करा. इफ यू कैन नॉट गो टू अ सेंटर, इफ यू डोंट हैव अ फिजियोथेरेपी सेंटर नियर बाय, then also this can be done by a therapist guiding you at home and giving a home program. Second thing, if you have access to aquatic therapy, if you have access to hippotherapy, of course these are demanding on financial side as well. Right. For a parent, aquatic therapy pool has its maintenance charges. Hippotherapy
in hippotherapy also the device has certain cost. If you can go with it, well and good. Of course, they will also help in development of the child. They have their benefits. But as I said now, the time and cost will also it's not like if you are giving hippotherapy then it's fine, you cannot go with physiotherapy. Basic you need basic stretching exercises daily basis. You need certain exercises to be given to the child. So we have to plan a child's schedule according. Correct. Yeah, makes sense. So now let me take some questions that we have got from the comment section. So number one question is from Charan Singh Dhillon. He's asking 4 year के बच्चे में second time बोटॉक्स दे सकते हैं स्पास्टिक डाइप्लेजिया में, और उसके बाद कौन सी थेरेपी करानी चाहिए? तो बोटॉक्स पैर के लिए अच्छी है या नहीं? The first thing we need to take care of is assessment. मतलब चाइल्ड का स्पास्टिसिटी ग्रेड क्या है. स्पास्टिसिटी मतलब जो टाइटनेस जो मैंने समझाने की ट्राई की, उसके ग्रेड्स होते हैं कि एक होता है कि बोटॉक्स आप दो और आपको रिकवरी मिले, और कई बार इफ द ग्रेड इज हाई, so you need a proper assessment of spasticity first to be done. Correct. Second thing in botox, if you are giving बोटॉक्स यू हैव पोस्ट बोलिए कि मैंने बोटॉक्स आज बच्चे को दिलवाया और बच्चे का जो स्पास्टिसिटी है वो रिड्यूस हुआ और बच्चा ठीक हो जाएगा. नो, दे नीड कांस्टेंट एक्सरसाइजेस. नाउ व्हाई दे नीड कांस्टेंट एक्सरसाइजेस? बोटॉक्स क्या करेगा, आपके जो टाइट मसल्स है, बच्चे के जो टाइट मसल्स है उसको रिलैक्स करेगा. ओके, बट दैट इज टेम्पररी. नाउ दैट टेम्पररी टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, मैक्सिमम एक्सरसाइजेस वो मसल्स को देनी है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े. बोटॉक्स से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ नहीं. फॉर डूइंग एनी मूवमेंट और फॉर अज्यूमिंग एनी पोस्चर वी नीड स्ट्रेंथ आल्सो. सो स्पास्टिसिटी के लिए बोटॉक्स, ऑफ कोर्स अगर आप सेकेंड टाइम बोटॉक्स के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग गो फॉर स्पास्टिसिटी असेसमेंट. इज योर चाइल्ड स्पास्टिसिटी ग्रेड allowing the child to go for botox or not? Second most important thing, if you are giving botox, if you are going ahead with the botox, go for physiotherapy or go for the continuous vigorous physiotherapy. I will say वो टाइम ऐसा है ना जिसमें मैक्सिमम फिजियोथेरेपी चाहिए. आप अगर तब फिजियोथेरेपी नहीं दे रहे हो पोस्ट बोटॉक्स तो आप वो वेस्ट है. वो बोटॉक्स आपने जो दिलवाया वो वेस्ट हो जाएगा. So be careful about this thing. If you are going for it, go with physiotherapy and with assessment. Right. That takes me to the second question, and that is कि अगर हम बच्चे को रेगुलर मसाज और एक्सरसाइज कराते हैं तो बच्चे कितने मंथ में ठीक हो सकता है, एटलीस्ट चल सकता है? So I guess the question answer is very straightforward, but I would love to give you सी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. राइट. नो कंटिन्यूअस थेरेपी आप करा रहे हो तो पहले ब्रेन का कौन सा हिस्सा कितना डैमेज हुआ है एक तो वो हमको मालूम होना चाहिए. अकॉर्डिंगली आप थेरेपी डिजाइन करो ना. थेरेपी डिजाइन होने के बाद अगर कंटिन्यूअस थेरेपी हो रही है और 90 days इज द टाइम फ्रेम वेयर यू शुड नोटिस एनी चेंज. अगर 90 days में आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा, in 90 days when I say not 3 months of time, the neurons regenerate in that time. Like it's an enough time for brain to regenerate to some extent. अगर 90 days में आपको 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो ऑफ कोर्स it's not working for the child. Second thing, अगर इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो the child is showing response, positive response to the therapy. Like अगर child का milestone sitting अचीव कर लिया है, okay, तो next milestone क्या होगा? Standing. So we will be working, but
At the same time, we have to consider the age of the child also. Right. At what age child is achieving certain milestone also matters over here. So Correct. as I said, every child is different and it's a Mm. continuous process. And Mm. Meghna, remember when we just started, you asked me like how was your day and how the thing is with the clinical practice. Right, right, right. Now, as I said earlier, na, we have kids coming from under 1 year of age Mm. to 12, 13 years of age. So Mm. here Mm. I'm giving an idea that therapy Mm. is something which is long term Long term. and continuous process. Mm. But at some True. point of time, if you are coming up with, like, if you are having certain home programs or you are getting therapies at home parallel with the schooling of the child, then it's better, of course. So again, this is a big question about schooling also in kids with cerebral palsy. So Right, right. it's a long term thing. Right. Absolutely. एब्सोल्युटली आई गेस दिस इज सो राइट पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेरिब्रल पाल्सी एक वन टाइम सोल्यूशन नहीं होता है इसका इसमें हमें कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म मेहनत करनी चाहिए और इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के बेनिफिट के लिए जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा है हम उस ऑप्शन को उस मेथड को पिक करें और उसको कंसिस्टेंटली करते रहे ना कि गैप दे दे के करते रहे अब before we part ways, I just have one more question, and that is around the tele rehab part. What do you think कि पेरेंट्स को किस हद तक के ऑनलाइन फिजियोथेरेपी मदद कर सकती है क्योंकि कई बार ये होता है कि पेरेंट्स या तो जा नहीं सकते या फिर घर पे भी आना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है ऐसे समय टेली फिजियोथेरेपी का एक ऑप्शन है जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है हेल्थ क्यू रिहैब में राइट सो आप उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो सो आपके अकॉर्डिंग क्या एक्सपीरियंस रहा है और इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं बच्चे को Okay. See, as I said earlier, na, tele-rehab is need of the hour. And second thing, it is more accessible now. Need शायद पहले भी रही होगी. पहले भी situations थी कि नहीं है कि वो लोग फिजियोथेरेपी ले पाए सेंटर है वो बहुत दूर है तो रेगुलरली दे आर नॉट एबल टू गो चाइल्ड नीड्स रेगुलर फिजियोथेरेपी उसको डेली बेसिस पे और एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ वीक need है physiotherapy की and continuous need है so in such cases what to do at that time tele rehab comes as a helping hand to the parents now I'm not saying कि physical contact को overrule कर सकता है tele rehab no but in areas where it's not possible to have access for physical approach there tele rehab helps a lot to a parent to continue the exercises and in times of COVID we had a major portion of therapies given on online platform on I will say the tele rehab was very helpful during times of COVID and that has made us learn that how we can teach parent according to the child's need the exercises and a parent can help their child for regular exercises and development. See, main advantage of tele rehab is ना it makes parents well equipped. मतलब parents के पास वो एक आप समझो कि उनके पास एक हथियार होता है कि हम कैसे exercises करा सके. मतलब they are not at level 0. So if they don't have access to physiotherapy, for their child, like with their child. So tele rehab helps a lot for continuous physiotherapy. Right, right. Absolutely. Very true, Dr. Rima. Many times क्या होता है मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है from the known kids and their parents. They कुछ फैमिली ऐसी आ जाती है पर्सनल हेल्थ इश्यूज आते हैं कि पर्सनल फैमिली का मतलब कुछ शिफ्ट हो गया ट्रांसफर हो गए या जहाँ रह रहे थे वहां से जो सेंटर था वो कहीं मूव हो गया या कुछ भी वजह से वो लोग ट्रैवलिंग नहीं कर पाए थेरेपी सेंटर पे या कोई थेरेपिस्ट आ रहा है वो अब नहीं आ पा रहा है डिसकंटिन्यू हुआ या थेरेपिस्ट इज नॉट अवेलेबल
तो वो टाइम में क्या होता है ना, बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट होता है कि बच्चा तब ग्रो कर रहा होता है, उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया होता है थेरेपी के लिए. लाइक एज आई सेड ना, 90 डेज में बच्चा रिस्पॉन्ड करना चाहिए थेरेपीज को. उसने रिस्पॉन्ड देना शुरू किया है, बट ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर, आउट ऑफ एनी वन ऑफ देम आल्सो चाइल्ड का थेरेपी रुक गया. तो क्या, अब बच्चे को जरूरत है, but they are not able to get physiotherapy. So at that time, na, tele-rehab becomes very critical, and it helps a lot to continue their exercises. And it also provides continuous touch and motivation to the parents who are giving therapy to their child. Right. Absolutely, so true, so well said. That's one of the very insightful session that we had till now, especially on cerebral palsy. Thank you so much, Dr. Reema, for your time, for your information sharing, and answering the questions that our subscribers asked to us so patiently. Glad to have you in our team, and looking forward to have more meetups like this so that patients can get a lot of benefit from your information and knowledge. Thank you so much. Thank you so much, Meghna, actually, for providing me with this platform. Now, when I connect with the parents on tele-rehab platform, now I get those chills. Like parents tell me, like they don't have access to physiotherapy. Initially, it was like, for me, I felt like during COVID, parents might or parents were not having that access, वो नहीं जा पा रहे थे therapy के लिए. But when I joined HealthQ, I came to know there are still many parents who are not able to have access to proper physiotherapy in their areas, and they need guidance. And that way we can reach out to more parents and more kids and help them. Absolutely. So I'm really grateful to come across you and the HealthQ Rehab here. No, same here to have you also on board. On that note, we'll end this live video session here. Looking forward to have more sessions with you, Dr. Reema. And friends, thank you so much for patiently watching today's live. If you have got any other questions, if you want to interact with Dr. Reema Jani, we would be leaving the website link in the comment section as well as in the description of the video. You can directly go log on to our website and book a direct appointment with her, and you can have a one-on-one meetup with her. She is an expert when it comes to cerebral palsy. I can't tell you like the amount of knowledge and experience she has got. It's rare to find in India. So please take benefit of her knowledge through HealthQ Rehab. Thank you so much for joining. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Yeah. Bye-bye.